Welcome. It's day 11 of our meditation experience. Gratitude, when experienced and expressed from the purest part of you, comes back to you in bigger and more unexpected ways. Well, that is no coincidence. The more we open up in gratitude, the more benevolently the universe responds. And Deepak is going to show us that just as every flower blooms and every tree sprouts new leaves, we see the ways in which nature creates its own cycle of abundance when we open in gratitude to the bounty in every moment. The universe's infinite abundance is here for us, always. There is no greater comfort than to know and believe this to be true. So let's relax into that comfort as Deepak leads us deeper. And then, as always, we will sit in silence and let it fill us. We'll meditate. In a moment of grace, you feel safe and worthy. An atmosphere of love is all around you. These privileged moments are beautiful, but if we look beyond the moment, nature is infinitely generous. You are supported all the time because you are unique in the cosmic scheme. No one like you has ever existed, and you cannot be replaced. It takes inner growth to see this truth and to own it. Every time we meditate, we take one more step toward this goal. But this isn't the kind of fulfillment you must postpone. You can live right now with the perspective that nature is supporting you. Abundance and generosity fill the natural world. The only separation is the one we impose through our old conditioning and outworn beliefs. The more we appreciate, the more generous nature is toward us. Feeling unworthy or victimized, these are the symptoms of contracted awareness. We become like someone standing in a river, but only able to drink from a thimble. If you recognize limitations in your own situation, it's good to take active steps to better it. But the holistic way to expand awareness isn't by attacking one issue at a time. Meditation gives you expanded awareness all at once. After you open your eyes and go back to your daily routine, some of this expansion lingers. More and more will remain with you over time. But even after the first day, your cells are beginning to function better, down to the level of your genes. This is a tangible sign that expanded awareness isn't passive. It opens you to the generosity of nature that is your birthright. Expanded awareness is what's normal, and awareness contracting from fear and doubt is what's abnormal, even though we have all experienced it. The reason that nature is generous is that constant replenishment keeps life going and growing. Without a flow of life, a rosebud can't open into a bloom, and neither can a human being. Once you see how necessary this is, you can be more generous in your own life. Giving isn't a loss anymore.
It's the passing on of a gift that will always be renewed. Expanding on the inside gets reflected as greater success on the outside. Gratitude effortlessly links these two domains of life, the inner and the outer. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought. The more grateful I am, the more my life is supported. The more grateful I am, the more my life is supported. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Now, gently introduce the mantra Om Purnam Ada. This mantra affirms that nature is inherently full, abundant, and complete. As you repeat the mantra, feel that abundance as unconditional grace, showering blessings on every aspect of your life. Repeat it silently to yourself. Om Purnam Ada. Om Purnam Ada. Om Purnam Ada. With each repetition, feel your body, mind, and spirit open and receive just a little more. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Om Purnam Ada. Om Purnam Ada. Om Purnam Ada. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Om Purnam Ada. Om Purnam Ada. Om Purnam Ada.
It's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. As you continue with your day, contemplate the centering thought. The more grateful I am, the more my life is supported. The more grateful I am, the more my life is supported. The more grateful I am, the more my life is supported. Namaste. శుభోదయ సుప్రభాతం. सुप्रभातम. कौन सा शेयर? शुभोदय सुप्रभात सर. शुरू करें मेरा? हाँ सर, एक मिनट. आप शेयर कर रहे हैं? आज श्लोक कौन सा है? हाँ सर. आज कौन सा श्लोक है? हाँ सर, शुरू कर. एक मिनट, आज कौन सा श्लोक है? कुछ दो जी. सर मुझे ध्यान नहीं है सर. 27. अच्छा, अभी शेयर करता हूँ. लो प्रभु 27. अभी करता हूँ. 27 28 प्रभु. 28 पता है 28 एक सेकंड. 28 सॉरी मैम. 28 है. हरे कृष्णा. हरे. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे.
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। लो जी शेयर करते हैं। और हेलो प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हाँ जैसा कि बताया, मुझे आज ना एक व्याख्यान देने जाना है, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो हाँ हाँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो इस चैप्टर में जो भी डिस्कस किया है, जो भी हमने चर्चा की, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और फिर जपा कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि अभी मैं कुछ देर में निकलना होगा, तो 8 बजे से है, तो इसलिए आप लोग अगर डिस्कस कर ले तो अच्छा रहेगा। हम्म। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही ज्ञानवान हैं, तो अगर आज आज का भी श्लोक ले लीजिए, आज जो हम श्लोक पढ़ने वाले थे उस पे आप लोग चर्चा कर हाँ, लीजिए। नॉर्मल जनरल डिस्कशन करते हैं, वैसे आप चर्चा कर लीजिए, उसके बाद जो है जब कर लीजिएगा। ठीक है, हो हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, हाँ जी। yes, हो जाएगा ना। हो जाएगा तो वही करेंगे ना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ठीक, ठीक है, लेकिन आप लोग डिस्कस करिएगा, ऐसा नहीं कि हरीश प्रभु खाली बोलते रहे, आप लोग फिर अपना चाय बनाते रहे। तो हम्म, आप लोग को भी सहभाग लेंगे तभी ये डिस्कशन हो पाएगा। ठीक है, ओके, कर लीजिए आप ओके। लोग। हाँ, फिर उसके बाद फिर मे बी सिक्स हाँ फोर्टी के बाद आप लोग जो है जब वगैरह कर लीजिएगा, चलेगा। हाँ, ना प्रभु नहीं हो रहा आपका। हाँ, मेरे से नहीं हो रहा सर, आप ही करिए प्लीज। पता नहीं क्या क्यों बार बार फंबल कर रहा है। आप करिए प्लीज। ठीक। हरे कृष्णा। हरे, एक मिनट। आज तो तो क्या पढ़ना, क्या करना है यार। आज 27th है सर। नहीं, कल कल 27 किया 26 ना। हो गया। नहीं, 26 हो गया कल। इसी बात तो कल में कुछ गड़बड़ है। हाँ, बराबर है आपका। कल ये क्या। हाँ सर, 27th है बराबर है। आज। Yes. मैंने लिखा गलत है उसमें। मेरा जो लिखा है ना उसमें, ये रुपया कल मिस्टेक हुआ हाँ, होगा। यस यस। संस्था प्रशंसतनामंस होन योगिन सुखम सुखम उत्तम उपैति शांतरंजन ब्रह्म भूत मकल कलमस्म अकलमस्म सिनोनी। प्रसन्नता peaceful fixed on the lotus feet of Krishna. Manasam, who is mind. High, certainly. Inam, this. Yoginam, yogi. Sukham, happiness.
Uttam, the highest. Upati, attains. Santa Rajasam, is patient, pacified. Brahma Bhutam, liberation by identification with absolute. Akalmasam, freed from all past sinful reactions. Translation. The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme and thus he is freed from all relation to past deeds. Purport. Brahma Bhuta is the state of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. Mad Bhaktim. Mad Bhaktim Labate Pranam. Param. One cannot remain in the quality of Brahma, the Absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. So why Manaha Krishna Padaravidya to be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. हरे कृष्ण का मतलब समझा नहीं मेरे को एकदम. The yogi whose mind is fixed on me, मतलब कृष्ण पे, verily attains the highest of transcendental happiness. अच्छा, जो भक्ति में है वो खुश है. Is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity. उसकी identity मालूम पड़ता है with the supreme and thus he is freed from all reactions to the past deeds. ठीक है, तो कुछ कोई बोलना चाहे. हाँ मेरा बहन. हाँ सर, इसका मीनिंग आप तो पढ़े हैं. इसका हाँ मीनिंग तो है बोले तो किसका मन बहुत शांत रहता है ना, और किसका हु इज डिवाइड अप ऑल द सिंस एंड ऑल, एंड हु इज डिवाइड अप रजोगुण आल्सो. रजोगुण 3 गुण रहते हैं ना, तामस, रज yes, और सत्व. वो सत्य रजोगुण जो सब में रजोगुण रहता है वो भी शांत हो गया है, तो वो क्या है, सच्चिदानंद हो रहे, सो ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है, और yes. ऐसा योगी को ही आनंद प्राप्ति होता है. ये तो ऐसा तो मैं समझी. तो प्रशांत मनसम व्योनम, ऐसा योगी को किसका मन सिन से ये हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और किसका मन शांत रहता है, कंसंट्रेटेड रहने का, कभी भी भगवान का चरण में कंसंट्रेशन रहने का है, उनको योगी करके कहलाते हैं. वो योगी को ब्रह्म प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है करके. ये मैं इसलिए कंसंट्रेशन बोले तो हाँ सर. मेरा इन्होंने लिखा है बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन. जो अपना होता है पैशन होना चाहिए, बहुत पैशन होना चाहिए, उसके भी आगे हाँ हाँ उन्होंने बोला जब भक्ति जी होता है सर. आदमी. हाँ हाँ, ये ये कुछ कंसंट्रेशन बोले समझे तो नहीं. इसको एक एग्जांपल क्या है कंसंट्रेशन का, लोकमान्य तिलक का देते रहते हैं. लोकमान्य तिलक को इसमें पीठ में कुछ एक बॉयल का ऐसा वो ऐसा रहता है, वो ऑपरेशन करने का रहता है. ऑपरेशन अच्छा करने के करने का वो ये देते हैं ना, हाँ मेरा बहन. डिस्कनेक्ट हो गया. She got disconnected. एडिक्ट डिस्कनेक्ट नहीं है मेरा बहन. आवाज आ रही है आपकी. उनका इंटरव्यू में कभी होता है गड़बड़. एनीवे प्रभु जी आज नहीं है. उन्होंने बोला डिस्कस करो. अभी डिस्कस अपन तो इसमें क्या करें, वही बता सकते हैं. इसमें
गीता का ये डिस्कस इतना इजी नहीं है अपने लिए। सिर्फ एनीबडी वांट टू से समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग बात करना हाँ, है इसके और बात करना है तो डिस्कनेक्ट हो हाँ गया था मेरा मेरा, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ हाँ मैं समझ गया, वही मेरा कुछ जवाब। हाँ। मेरे को खाली ये नहीं समझा, ही इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पेशेंस। पेशेंस से आगे बियॉन्ड एक द था मोड ऑफ समझाने में। पेशेंस कौन सा मतलब पैशनेट होना चाहिए आदमी को, उसके पैशन? भी परे हो। हाँ इसमें परपट में है क्या? नहीं, ट्रांसलेशन में वही तो ट्रांसलेशन परपट में है, परपट में। परपट में क्या लिखा है, देखना पड़ेगा, एक ट्रांसलेशन में लिखा है ऐसा। One who is always in the loving this thing. Always in the constant loving service of Lord. One cannot remain in the lotus feet of the Lord. One cannot remain in the quality of Brahman, the absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. So engaged in that. One in the but he is the mode hacha इधर ऊपर से, he is beyond the mode of passion. He realizes his quality I mean, identity with the supreme and thus it's वो सर बोली तो ऐसा पैशन बोल के नहीं रहने का, उनका पूरा उसमें शरणागति बोलते हैं, शरणागति बोले तो पूरा हम क्या है हमारा Submission. हाँ बुद्धि मन सब शरण ये कर देते हैं उनको, so mode of कर passion means देते हैं ना वो चॉइस होती है beyond characterized mode by of the passion. attraction between man and woman. That is the mode of passion. As per नहीं 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 पैशन तो पर्पस है कि हम Purpose. लोग सब अपनी लाइफ के अंदर अपने पैशन से ऑपरेट करते हैं। किसी को गार्डनिंग का पैशन है, Yeah, किसी का टीचिंग yeah. का For पैशन है। passion it's is Yes. the Rajoguna, Krishna you can is say. beyond the passion. Krishna is beyond the passion. मतलब he beyond the, should not be our choice. He should not be our option. He has to surrender. कि yeah. वो सब तो हम अपनी लाइफ में अपना पर्पस अपना पैशन तो जी रहे हैं, बट उसके बियॉन्ड हैविंग कृष्णा शुड बी आवर अल्टीमेट एम। लाइक उन्हीं के थ्रू हमें That सब कुछ मिला है, तो उनको तो completely हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ही इज नॉट द चॉइस बट आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इन नहीं लाइफ। नहीं समिता बहन, इन्होंने क्या लिखा हाँ है, हाँ द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी ओके वेरीली attain the highest perfection of transcendental happiness. बराबर, he बिल्कुल is बिल्कुल beyond, मतलब योगी, वो योगी इज बियॉन्ड पेशन, हम्म मतलब वो उससे भी आगे चला गया ऐसा, मतलब अपन मतलब पेशनेट इज द हाईएस्ट, मतलब उससे भी आगे चला गया, ही इज इन द भक्ति में। आई थिंक उसका ये मतलब होता है कि he gets हाँ lot of happiness. बिल्कुल। मतलब आप कोई भी काम अपना पर्पस पैशन तो कर रहे हो, लेकिन पैशन के बियॉन्ड उसके भी हम लोग आगे हाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर अगर हम सब कुछ करें तो दैट इज आवर अल्टीमेट हैप्पीनेस। बिकॉज दोज हु फिक्स माय इन माय माइंड विथ कृष्णा, तो हमें एक हमारे पैशन के बियॉन्ड जाके ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम पैशन कर रहे हैं, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में करें तो आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। In Not only to we should explain not it in choose him as a simple, passion. It should be a, it should not be like a passion, the bhakti or a Krishna puja or anything. It shouldn't be as a passion. It should be like a surrendering to him. करेक्ट करेक्ट। the surrendering mode है ना, of passion भक्ति है actually इज means ऑल अबाउट सरेंडरिंग, Oh. भक्ति ऑल अबाउट सरेंडरिंग। no, it's in simple words, it's the Rajoguna and Tamoguna. That is the mode of passion, especially the Rajoguna. Yes. ये तो एक गुण हो गया ना, सदगुण रजोगुण और तमोगुण। हाँ, the mode ये of passion even the person is passionate, he can be in the रजोगुण, in सत्वगुण और what भी, yes. पर जब भक्ति में होगा तो सत्वगुण में ही होगा, नो डाउट। रजोगुण मतलब राजाशाही, तमस मतलब लाइक जो गंदे विचार है,
एंड सत्य गुण मतलब भगवान को, डिवाइन, राइट? Yes. इनसे मतलब थॉट। कल स्वामी जी बोल रहे थे ना, मन कभी भी प्रेयस के इसमें जाता रहता है, मगर बुद्धि इसको उसको श्रेयस के लाइन में लेके आते, हाँ। लेके आने का करके। Correct. और सबसे बड़ा ये ना, मन पे काबू आ गया, नेक्स्ट वो कैसे आएगा? बुद्धि से आएगा। मन पे काबू कैसे आएगा? बुद्धि से आएगा। बुद्धि से आएगा, हाँ, तो इंद्र जो निग्रह आदमी से बुद्धि से आएगा, काम बुद्धि करता से है, आएगा। जो आदमी बुद्धि से काम, वही सही काम करेगा। मन से करेगा वो क्या, विचलित हो जाएगा। जो मन से करेगा वो उस भाव में चला जाएगा जो उसको मतलब सुख देता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और जो आदमी बुद्धि से करेगा, ही वोंट गो फॉर इंस्टेंट, बिकॉज एक्चुअली देखा है ना, जो चीज से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इमीडिएट मिलता है, वो लगभग अच्छा नहीं होता है। जैसे सिगरेट में क्या आनंद आता है आपको, कोई दारू पीता है उसको मजा आता है, कोई गुस्सा करता है, गाली बकता है, उसको अच्छा लगता है, मगर उसके दुर्गुण बहुत है आगे जाके। और जो आदमी शांत रहता है, सोच के काम करता है, इनको इनिशियली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मगर लॉन्ग रन में उनको बहुत फायदा होता है। सो ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, वही इंस्टेंट एफर्ट ग्रेटिफिकेशन करने, वाली चीजें। हाँ जी, हाँ मेरा बहन। वही तो आप बोले तो सही है, एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट के लिए पहले साधु संग, उनका संग करने का है, साधु संत ये लोगों का, और संग अच्छा नाम होना जप करने चाहिए। का है। कलयुग में हाँ, जब से ही मुक्ति है। नहीं नाम जब और में एक आप गीता की एग्जांपल बात दिए कर रहे थे, हो ऐसा बोले तो मेरा बहन, ये नाम हाँ जब आप हाँ गीता की बात कर रहे हो, इन जनरल बोलता हूँ कि आदमी दो टाइप से डिसीजन लेता है, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और एक थोड़ा आगे जाके। जो इंस्टेंट रहता है ना, वो क्या है, उसमें मन से लेता है डिसीजन, अरे वाह मजा आएगा, चलो बाहर घूमने जाते हैं, चलो वीडियो गेम खेलते हैं। और जो बुद्धि से डिसीजन लेता है, यू विल नॉट गो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यू विल थिंक अबाउट फ्यूचर। मतलब आज मैं गेम खेलूंगा तो मेरा काम नहीं वो होगा, चीज तो वो काम पे ध्यान दे। मैं उस पर जा रहा था, दोनों में फर्क इतना। अभी क्या, गीता का जो है, ये भी समझने के लिए ना, मैंने देखा बहुत प्रकार है। आदमी क्या मतलब परसेप्शन क्या है, गीता में इतना कुछ लिखा है, हर आदमी अलग अलग ढंग से सोचता है। मैं तो कई बार बाकी वीडियो देखे ना, थोड़ा थोड़ा सोच अलग रहती है, मगर ओवरऑल डायरेक्शन इज गुड। हमको एक अच्छा डायरेक्शन जाए, हर इंसान अपने हिसाब से ही काम करेगा। गीता पढ़ेगा ना, वो जिस काम में लगा हुआ है, जो उसको इच्छा है उसकी, वो हिसाब से वो गीता को पढ़ेगा, पर ही विल गो टू अ राइट डायरेक्शन। जैसे प्रभु जी भक्ति में चले गए, हम शायद भक्ति में नहीं जाएंगे, मैं 16 माला नहीं गिन पाऊंगा समझो, पर मैं दूसरा काम करूंगा, उसमें भी मैं भक्ति का भाव लेके आऊंगा, तो उसमें मैं गंदगी नहीं करूंगा सबसे, आई डू विथ प्योरिटी। वो एक फर्क पड़ जाता है। यही, एक हाँ होता यही है, बिल्कुल। एक बिकॉज मिनट, क्या क्या कौन बोल रहे हैं? मैं सौमिता बोल रही हूँ। मैं यही कह रही हाँ थी कि अगर ह्यूमैनिटी, इफ आप अगर सर्विस टू ह्यूमन बीइंग करते हैं, ह्यूमैनिटी करते हैं, अगर 16 माला नहीं हाँ जप करके अगर आप सर्विस टू ह्यूमैनिटी करते हैं, और वही कि अगर आप हर इंसान की सेवा इस तरह से करें कि वो इंसान नहीं, वो आत्मा है और आत्मा एक परमात्मा का अंश है, बस, तो इनडायरेक्टली वी आर एब्सोल्युटली। सर्विंग गॉड, इनडायरेक्टली वी आर सर्विंग गॉड। तो ह्यूमैनिटी बिकम्स आवर फर्स्ट रिलीजन। बट कई बार बट प्रभु जी के हिसाब से थोड़ा नाम जप करने से हम थोड़े से इंक्लाइंड रहते हैं। आई मीन थोड़ा सा भी, वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू गीता में ये कहा गया है कि अगर नाम जप करते हैं तो हम अपने पाथ से डेविएट नहीं होते हैं, क्योंकि आखिर मन तो चंचल है उसकी, लेकिन हम हमें उस चंचलता से हम कभी भी फिसलने देते नहीं है। और दूसरी बात, जब कल हम लोग एंगर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि काम भाव होता है, या व्हेन एक्सपेक्टेशंस डजंट मीट अ रियलिटी इट कॉजेस यस, एंगर,
और हम लोग कहते हैं कि हम लोग बुद्धि से काम लेना चाहिए, पर कई बार जैसे एक तरफ से तो हम कहते हैं आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम आत्मा। तो बुद्धि और माइंड, मन के परे भी एक आत्मा है, और उस आत्मा का ज्ञान होकर अगर किसी काम को करते हैं तो वो एक हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी पे को लीड करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, लेकिन मेरा शरीर है जो भूख, जिसको भूख लग रही है, उसको फूड चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। और जब हमें सही है। कई बार कोई काम की भावना नहीं, लेकिन सिर्फ भूख की तृप्ति न होने से भी कई बार गुस्सा आ जाता है। तो भूख इज द नीड ऑफ द बॉडी। तो वो एट भी द बॉडी की सेम नीड है ना। टाइम, हाँ, तो एट द सेम टाइम कौन सी नीड वैलिड है और कौन सी नीड नहीं वैलिड है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि कोई नीड तो वैलिड है, जैसे प्रभु जी ने बोला कि अगर हम लोग कृष्णा की भक्ति में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है और तब गुस्सा आ रहा है, तो दैट इज अ वैलिड एंगर। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा को खाना नहीं मिल रहा है और वो भूख से एंगर कर रहा है, तो वो वैलिड है। तो हम इमीडिएटली फटाफट उसकी मदर किचन में जाके कुक करके और उसको फूड सर्व करती है, और उसका एंगर शांत हो जाता है। और अगर हम उसको, सही बात। कई बार वर्कaholic हो जाते हैं लोग, और वर्कaholic की वजह से खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, वीक हो जाते, वीक होने से एंगर हो जाता है। तो Absolutely. yes, we should be able to distinguish between what is the correct this one and what is the not a correct हाँ anger. और मेरे को तो यही लगता है कि बच्चे अगर बचपन से, जब साधु संत का संगत, तो हम ये कह रहे हैं कि हम सुबह सविता भक्ति, बहन, हाँ एक मिनट, इसमें जो एंगर बात करते हैं, एंगर है ना, समझो आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए थोड़ा गुस्सा आ गया, तू पढ़ता क्यों नहीं है, तो एंगर अच्छा है। मगर उस एंगर को इतना आपने हवा दे दिया कि वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपने उसको जो जो से बोलना शुरू किया या एक लाफा मार दिया, तो वही एंगर आपके विरुद्ध काम करेगा। क्योंकि बच्चे को जब आप, पहले जमाना अलग था, पहले हम कर जॉइंट फैमिली रहते थे, 7 8 बच्चे साथ में रहते थे, तो एक लाफा पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी को। मैंने देखा है मेरे लाइफ में। अभी तो आप जरा भी चिल्लाओगे ना, बच्चे को हाथ होती है, उसका ईगो उठता है, वो छोटे बच्चे का। करेक्ट है, तो अभी हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है एंगर पे। करेक्ट मगर जो करेक्ट। प्रभु जी कल बोले थे कि कोई आदमी अवहेलना करता है भगवान की, वहां पर आप एंगर लाओ तो राइट है, जी ऐसा उनका बोलना था। पर वो भी देखो क्या है, मालूम नहीं कौन क्या बोल रहा है भगवान के बारे में, हमको कितना बोलना है, गुस्सा करके हम वापस उसको भी खराब करते, सब ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट इट इज वेरी करेक्ट, वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, एंगर। Yeah, एब्सोल्युटली। it depends on the child also, because each child is unique nature wise. Each child is Some unique, each child. Yes. yeah, कोई we have काफी to sensitive handle, we होता है, have to analyze their nature, and we have to deal with them, and we have to how to mend them. We have to every for every child there will be a specific way of handling, I think. 100%. Yeah, we cannot generalize whatever we have read in psychology or whatever we have read in book and all. We cannot just implement. Just we have Correct. to first study the child. What is the nature of my child? First we have to. Then we have to tackle them. That is my experience also, and that is my opinion. Yes, 100% agreed. Yeah. Harish, can I chip in, please? Of course, why not? Yeah. Open for everybody. In the last sentence of today's purport of the sloka, it has been clearly Uh-huh. mentioned, which I would like to read out, once again. Yes, Be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or Lord. to remain in Krishna consciousness is to be factually liberated from the mode of passion and all material contamination. That means we should come out of our passion mode. See, nowadays देखिए क्या हो गया, passion has become a very fashionable word to be used. You should be very passionate to achieve something. Okay. Passion has got a negative connotation built in, because as somebody said, the passion means you are in the mode of rajas guna or tamas. It is a combination of rajas and tamas. Now we have to come out of that and get into sattvic mode. Only when we are in sattvic mode, we get liberated, and we can achieve something. Nowadays, it has become more of a, in my opinion, it has become more of a fashion to use, oh, you should be passionate here to achieve something, you have to excel something. If you want to excel in something, you should be
passionate, you should be highly passionate person, then only you can achieve. But in my opinion, passion can be interpreted in two ways. As Sumta madam was saying, you have to be passion. Yes, you should be passionate, in achieving something, but with a clarity in mind that you are not in a rajas mode or a tamas mode. You have to come out of that rajas and tamas mode, get into sattvic mode to achieve something great in life. And that is possible by understanding the Bhagavad Gita, this particular sloka as it is. That's why they say we should, there is always duality existing in human mind. Most of the times that duality exists. If somebody says something, the other person says diametrically opposite to that, and both try to justify. We should come out of this duality state of mind, and that is possible only if you get into sattvic mode, and continuously if you go on chanting this mantra, as told by Prabhuji, there is a possibility of realizing within ourselves. Yes, we can, it becomes easy for you to come out of the existence of duality in most of us. This is what I feel, Harish bhai. Correct. और क्या है, एक बात नहीं, मनोज जी, मोहन भाई, if he is you not are passionate to passionate do. about something, No, it's not passionate. It is determined. To achieve a goal, we need to be determined. We don't need to be passionate. Passion का तो Yeah, मतलब होता है 80% लोगों को अपना passion ही नहीं पता. भगवान ने हर एक के अंदर, God has given inside everybody's body that golden key to know what you are naturally talented towards it. And when you do that work, it doesn't look like a work. It looks like it's so joyful. It doesn't like an hard work. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि we should be passionate to achieve something. We should be determined to achieve something once we know that what our passion leads to. But यहाँ पे भगवत गीता में कृष्ण should not be with passion. It is beyond passion, because yeah, वो yeah, तो absolutely surrender right. position है. वो तो surrender position है. Yeah, very nicely explained. Yeah, thank you. Yeah. No, but I was just trying to explain, nowadays, the people use, the word, passion in a different Yes, yes, it's tone a fashionable altogether. word. Yeah. Agreed, No, agreed. in my opinion, it has got a negative connotation attached to that. We don't realize, because nowadays, we say, oh, if you want to excel in something, yes, you should become, passionate. But there is a negative connotation which we should try to understand and come out of that passionate mode. And as you rightly said, Sumta Ben, we should yes, determination has to be there with a conviction, and that kind of a determination and conviction is possible to a person only when he is in a sattvic mode. And if he goes on practicing continuously day in and day out, then only you can be in a sattvic mode 24/7, 365 days. And that is possible only by chanting this Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Over a period of time, you get into a sattvic mode. It is not possible to happen things overnight. It won't happen. It takes time. That's why they say, Prabhuji says, for at least 16 malas one should do, and that also consistently. Then only see, there is a possibility of getting into sattvic mode, which is very, very difficult for mortals like us. We should, as you rightly said, yes, determination has to be there, the conviction has to be there, and all those things can happen to human beings only out of awareness, and by being in a conscious mode. And that is possible only and only, in my opinion, I may be wrong, please correct me. And you, by getting into sattvic mode, and that is possible by following certain do's and don'ts, then only we can get into a sattvic mode. Yeah. That एक do बात and don'ts, बोलूं, that is in मोहन भाई, Niyam, Pratyahara, नहीं, those are आप कुछ बोल रहे मैं थे एक बात हरीश बोलता हूँ साहब? आपको, एकदम सिंपल, मोहन भाई, one simple thing. If you have a passion for something, Right. and when you are passionate, you are submitting to that act or that service or whatever you are doing. When you do that,
with a win-win situation in your mind. मतलब आपका भी भला सबका भला. You also get benefit and also you will benefit others. Automatically Right. it will become sattvic. Automatically Right. that thing will become sattvic. Right. But Right. when you do something just for your own sake, without Right. caring for others, so let us always be in a divine mode to do something. Right. Let's Ji. go beyond the passion and bring divinity in that. Absolutely, Prabhuji. Yes, you nicely said. But again, Uh, Prabhuji, to get into that mode, that sattvic mode or win-win situation, maybe, you are already, in an advanced state of, mind, body and soul. That's why, you're saying like this thing. Let us say, somebody is not in that mode. For that, there are suggestions, okay, if you do like this thing, yeah, there is, yeah. you can get into that mode. What we say is right. The patience has to be there. Persistency, pursuance, prayer has to be there. But then, if I But don't with the have that, divinity, yeah. with There the has to be divinity, divinity in yes, that. हाँ. yeah, of course, Because it has to जैसे be हम लोग नाम जप क्यों करते हैं? To bring that divine presence in ourselves. तो absolutely, yes, आप नाम जप करते हो, हम लोग नौकार मंत्र गिनते हैं, हम लोग नौकार मंत्र करते हैं, ठीक है, और सबका अलग अलग होता है. But all is about being near to God. Go near to God. God मतलब go near to godliness. Doing yes. something good for everybody. और बहुत हमारे अच्छा ढंग नौकार से मंत्र है बताया ना, जी. सुमिता Yeah, मेरे को मालूम है, नौकार मंत्र में भगवान का नाम नहीं है. वी आर जस्ट गोइंग टू भगवान, फिर साधु संत, ये पूरा एक अलग मंत्र है क्या. हम वो ज्यादा बोलते हैं हमारे जैन धर्म में. तो सबका अपना oh. धर्म में अलग अलग तरीका है, बस बात सेम ही है. गोइंग टू द Right, जी. नियर टू Yeah, गॉड. yes, राइट near to सुमिता बेन? divinity. Yeah, हाँ. Yeah, actually, Prabhuji always talks about this A, B, C, D, and E of हाँ. the devotion, like what you have to perform, what all the devotional service constantly we should be doing. The association, A for association, B for book, C for Book reading. chanting, yes, D for diet, offer food to Lord before consuming it, and engagement. Means in the sense we have to help who is serving the God. So all these things, if we constantly do it, these are the devotional services. If we follow, automatically we will fall into that. divine mode. Yeah, Yes, Krishna. Yeah, we will be in Krishna consciousness. But this is yeah. very These important are that all tools. These are all tools. Yes, They are the do's, yeah, ABCD, and another one, don't, this one are non-vegetarian nahi karne ka, and should not gamble, and should not have any vices, and should not have illicit relation with relationship. other, this one. The do's and do nots are the main things. yeah, If you very understand, true. we follow them, then it is वो तो possible to tread in a proper way, slowly towards the attaining the Krishna consciousness. I these think so. 4 things, if you obey, you will be out of Yeah. all bad things. Yes, जुआ yes. निकलना Yeah. है, ये मेन है सबका. जैसे हमारे जैन धर्म के भी जो 4 या 5 है, सुमिता मेरे को शायद बराबर याद होगा, मुझे याद नहीं है, वो भी यही है, किसी और का माल अपना नहीं लेने का, मतलब वो वर्ष याद नहीं मुझे, किसी का बुरा नहीं सोचने का, सब कुछ है हमारे में, सब में है, बुद्ध भगवान में, सभी. मतलब ये कोई भगवान गलत नहीं सिखाता है, हम लोग गलत मतलब निकालते हैं. Yes, yes. Yes, correct, sir, Prabhuji. हरीश भाई थोड़ा ये मोहन बताएंगे, आप प्रभु, जैन धर्म में देखिए फास्टिंग बहुत करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे आप? फास्टिंग, वो पानी पानी पी के देखिए ये रहते हैं फॉर डेज टुगेदर और वीक टुगेदर, इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस बताएंगे आप? सेंसेस कंट्रोल में आ जाता है, बहुत इजीली हम बराबर, अपने पर इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं फास्टिंग करने से, और हम्म, इंद्रियों पे बहुत 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 और विल पावर, जिसे हम कहते हैं कि हमारा विल पावर इतना दृढ़ हो जाता है जब हम लोग फास्टिंग करते हैं. तो Yeah, that's a तो मैं तो control of एक बात बोलूं आपको, तो जी एक बात हाँ, बोलूं आपको, control of ये हमारे धर्म या किसी धर्म में जो आदमी बहुत पूजा पाठ करता है, ये कहता है ना, बाद में कभी कभी है ना, उनको घमंड आ जाता है कि मैं आई एम मास्टर. वो तकलीफ है कभी Yeah. कभी. You start telling everybody, तू ये कर, तू वो क्यों नहीं करता है. करेक्ट Seeing what he is करेक्ट doing. करेक्ट. हाँ,
हाँ To हाँ get हाँ also constant डीप नॉलेज introspection नॉलेज और is needed. विजडम में वही फर्क है। हम थोड़े से बस नॉलेज लेकर बुलबुले की तरह फुदकने लग जाते हैं, और डीप नॉलेज और विजडम होता है वी शुड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन Respect. एज दे आर rather than Yes. imposing our opinions on them. Respect others. If they are ready to transform, then only we should give them a knowledge. If they are not ready, And Samita Ben, if they ask for, we should advise. We cannot advise without asking. absolutely. Absolutely. सही बोला आपने जी. Yeah, we cannot Let impose, us our views, on You others. can impose. Yeah, we cannot. And it is प्रभु जी रोज बोलते ना कि 6 आदमी आते कि 10 आदमी आते, वो बड़ी बात है. नहीं आते उसका कोई वांधा नहीं. right, Because we right. have no control on them ना. We can just Yeah. change ourselves. और अपने साथ कोई let us आके hear अपने को from मिल के Chetna Madam and Lowe Prabhuji and others also. हाँ चेतना बहन. Lowe Prabhuji and others also. We can. Ma'am, I just told about that ABCD. That is Yeah. what finally everything comes to chanting Hare Krishna Mahamantra. Ultimately, whatever the doubts we ask, whatever the questions we have in our mind, the solution for every problem is chanting the Mahamantra. Because it is the one that mantra has everything that basically purifies our mind and body. So And brings concentration also. yes, so it's a constant process, only through with which we can transcend our life. And to चेतना remain बहन, in chanting is Krishna. like chanting is like affirmation. It reminds you Yes, कि आपको क्या करना है. correct. You're right. Yes. Others also they can throw light on. Madam. Sorry. Alok Prabhuji, Loy Prabhuji and others, they can also tell their opinion. हाँ अभी 6:40 हुआ है. कुछ 5-10 मिनट बात करते हैं. आप बोलिए जरा. नो प्रभु जी है, आलोक जी है, शिवानी मैम है. नहीं शिवानी जी निकल गई. She's left. आलोक जी आप तो कुछ बोलिए. अखिलेश जी. आलोक प्रभु शांत है. ठीक है तो क्या माला जब करें या कोई बोलना चाहता है कुछ. नहीं, बस यही थोड़ा सा द्वंद रहता है कि हम लोग जैसे हरीश जी का ओपिनियन है कि कोई भी सारा काम जो होता है इन सर्विस टू ह्यूमैनिटी हम लोग कर रहे हैं, ये डिवाइन कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच करेक्ट. और दूसरी तरफ जब कोई लोग चैंटिंग को दे रहा है, और मोहन जी ने बहुत अच्छे से कहा कि जब कोई इंसान हाईली कॉन्शियस स्टेट में है तब तो ठीक है, लेकिन जो इंसान हाईली कॉन्शियस स्टेट में नहीं है तो उनके वो चैंटिंग अगर करता है तो वो सद्गुण के मार्ग के प्रति चलता है. और मेरा बस इतना सा द्वंद है कि हम नंबर्स कैसे फिक्स कर रहे हैं, 16 माला, 18 माला, 4 माला, 6 माला, तो वो 16 नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, और कैसे हम क्योंकि अगर मैं हर पल हर सांसें जब तक मेरी है ये 24 पहर में 24 hours, if I'm completely in a secular pose and in Krishna's consciousness, why I should direct my brain to numbers? Because I have my ultimate goal is to reach 16 malas to attain that Krishna's divinity. तो नंबर हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, बस वो एक हल्का सा द्वंद है, बाकी कुछ नहीं. बाकी तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज टू लव ह्यूमन इज टू लव गॉड. टू अगर आप अच्छे डिवाइन कॉन्शियसनेस में हो, और क्योंकि मेरे एक अंकल हैं, पूरी लाइफ उन्होंने सर्विस टू मैनकाइंड किया, और इतनी ब्यूटिफुली तरीके से डेथ विदाउट पेन हुआ, इतना क्योंकि जो भी कुछ कमाया बस ह्यूमैनिटी को सर्विस करते गए. ही वाज अ लॉयर, और उन्होंने गरीबों के लिए, काफी लोग जो है कॉर्पोरेट लॉयर्स बन के बहुत करोड़ों कमा लेते हैं, वो बहुत ही एमिनेंट लॉयर थे, और उनकी डेथ पर अभी भी 29 हाई कोर्ट्स के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है उनको. लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने, आई डोंट नो कि उनके पास इतना समय था कि वो पूजा पाठ माला जप करे, लेकिन जो भी किया सर्विस टू ह्यूमैनिटी
में किया, लाखों गांवों के अंदर, राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, लाखों गांवों में लोगों को पेंशन्स दिलवाई, जो लोग लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनके लिए फ्री के अंदर केसेस किए। तो दैट इज सो सुप्रीम एंड डिविनिटी टू Absolutely. डू द सर्विस टू मैनकाइंड। बट मेरे बड़े during my growing up years, I have never seen, because he has not that much of time to involve in bhakti, Mala. doing mala jap or that thing. हम्म, तो वो थोड़ा ब्रेन में द्वंद रहता है कि कुछ सेजेस हैं, शायद उनके लास्ट कर्मास की वजह से दे आर बिकम सो काम नेचुरली। मैंने उनको कभी, आई हैव नेवर सीन देम डूइंग एंगर ऑल्सो, because I have been, my initial years of my childhood went under his house. So I never seen him, because he has no time for all these anger, because his purpose, his passion was so determined to serve the humanity through the knowledge whatever he has. So वही लग रहा है, बस ये हल्का सा द्वंद है कि हम लोग जब नंबर्स फिक्स करते हैं 16 माला 18 माला, and how it leads to ultimate Krishna's No, consciousness. no, I think, this number, is just, part of the process. Somebody can, get into, in a sattvic mode just by chanting, maybe, two malas, or maybe, 4 malas, 6 malas. But I think, they have come to some understanding. Okay, 16 malas ye karne se dekhiye, there is a possibility. I don't think, ऐसा इसके बारे में देखिए द्वंद होना चाहिए। आप जो एग्जांपल दे रहे थे, देखिए, जो राजस्थान में इतना काम वगैरह किया है, maybe, he is, advanced soul. Maybe because of the previous life, this thing उन्होंने कुछ किया होगा, he is in that state already. But to reach that level, I think they have worked out. This is my personal opinion. I could be totally wrong also. So in fact, see, when Madhu Pandit ji, the president of ISKCON, he met the Prime Minister Modi ji, he told him to chant 16 malas per day. So then Modi ji said, 16 malas is not possible for me. I will do, only 1 mala per day. But then it all depends, it is, I think, it is ये जो मन में जो द्वंद होने का, देखिए, मुझे लगता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो देखिए, प्रभु जी भी जो बोलते हैं ना, आप डेली एटलीस्ट एक बार तो करो, मॉर्निंग एक बार, शाम को एक बार, हो सके तो देखिए 16 टाइम करने के लिए कोशिश करो। लेकिन जो लोग, देखिए, मैंने आई हैव मेट मेनी इस्कॉन डिवोटीज। मोहन जी, हाँ जी, एक मिनट हरी, 16 बार करेगा आदमी जबरदस्ती, उससे एक बार बड़े प्रेम से करेगा, उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। No, right, Time right, नहीं you're है, right, इसके Prabhuji, बाद but to come to that, प्रेम से करना, that divinity आने के लिए, I think, it is a process, it is one of the tool. We need not, we don't have to be, very dogmatic and, वही stick बोलता to ना, that this thing. अभी Yes. मोदी जी Since 16 करेंगे तो I देश कौन just want चलाएगा, आप समझो। मोदी जी uh, 16 करने लगे तो देश कौन चलाएगा। तो वहां उन्होंने एक भी कर लिया ना प्यार से, और बाकी दुनिया को सेवा कर ली, बहुत बड़ी बात है ना। Right, right. जैसे बड़ी इनके बात है अंकल जी। करते थे, बहुत बड़ा Yes, yes, काम किया उन्होंने। definitely, अंकल ने बहुत जो बड़ी बात है जी। छोटे Yes. आदमी का, बिकॉज हर एक में आत्मा है, आत्मा परमात्मा का वो है, एक छोटा पार्ट है। तो ही इज इनडायरेक्टली सर्विसिंग द गॉड। Yes, Prabhuji, right. see, we are into Bhakti Yoga. This our Krishna consciousness comes in Bhakti Yoga. So as per this, chanting is the main thing in Bhakti Yoga. Srila Prabhupada ji will always stress upon this chanting of Hare Krishna. If you can see Yes. any of his videos, he'll only stress upon chanting the mantra, and that is the Right. only way of purifying your mind and body. That's why we chant as per our Guru Parampara. That is Right. that has been told to us, so we are following it. और सविता इतना माता, There ये are तो other भगवान Yuga है। Dharmas. सबका अलग अलग सविता, पर्सपेक्टिव सुन के इतना सुंदर लगा। इवन चेतना बहन ने अच्छी चीज बताई कि देखिए सर्विस टू मैनकाइंड, क्योंकि वो मेल थे, क्योंकि उन भगवान के ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती की उन पे कृपा थी, इसलिए वो सर्विस टू ह्यूमनकाइंड कर गए। लेकिन हमारे घरों में कितनी गृहणियां हैं ऐसी जो ऐसा स्टेप, जिनकी लाइफ में दे आर बोर्न एंड ब्रॉट अप विद सर्टेन लिमिटेशंस, तो अगर वो भक्ति योगा से कृष्ण को पाले, हो सकता है अगले जन्म में कुछ और ही अच्छे सोल के फॉर्म में they come and they can serve the human world. So definitely Yeah, it's such a beautiful concept by Chetna madam कि अगर भक्ति योग से, अगर हम किसी लिमिटेशंस के साथ पैदा हुए हैं और अगर भक्ति योग करें तो शायद हमारे और लाइफ में,
क्योंकि मैं जब बचपन में थी, जब छोटी थी, तो खूब नवकार मंत्र जाप करती थी, लेकिन उससे मेरी प्रॉब्लम के आंसर्स नहीं मिले। और फिर जब मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स मिली, तो मुझे आई गॉट सो मेनी आंसर्स टू माय अनरिजॉल्व क्वेश्चन थ्रू माय सेल्फ हेल्प बुक, through which Navkar mantra, I was chanting the Navkar mantra, but I was not getting the answers. But now when I asked the same question to my husband, he said, don't say that your chanting gone waste. Through your chanting, maybe it's mechanically, as Dev Shankar Prabhuji says, maybe it's mechanically or with devotion, maybe the chanting has a higher vibration in the universe, and through your chanting, you get gurus in your life. Through your chanting, you got self-help books in your life. So chanting has its importance, and those, because of maybe of our past karmas, somebody gets late, somebody gets early, but chanting has also a very different perspective. तो चेतना माता ने अच्छा बताया. चैंटिंग का इतना फायदा Yeah, है, very nicely you expressed. are not diverted from the right path when you are chanting. भले आप 1 करो 16 करो मन से करोगे ना, आप always you will be on path. जैसे आपके अंकल थे, उनके पास टाइम नहीं था इतना, उनको इतनी सेवा करनी थी, उन्होंने भी भक्ति की होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, कि मंदिर, तो वो एक मंदिर जाना या अच्छे 7 लोग एसोसिएशन में रहना, उसका ये फायदा आता है, यू विल नॉट गो ऑन अ रॉन्ग पाथ. 100%. जरूरी है. 100%. 100% agreed. चैंटिंग से आप ऑटोमेटिकली आप ABCDE ऑटोमेटिकली आ जाता है शायद. Yes. I think we don't have to be too dogmatic about such things, but only thing is that yes, we are in a bhakti mode, but again it becomes controversial in the sense, how can we get into the bhakti mode? तो इसके लिए देखिए वो बोलते हैं कि चैंटिंग करना चाहिए भाई, चैंटिंग करने से देखिए वो पैरासिटामोल की तरह, किसी को एक गोली से ही बुखार गायब हो जाता है, किसी को 4 गोली लेनी पड़ती है. Yes, I think you have very nicely explained. Yes. Yeah. Depending on your Personally, body. what I have experienced by chanting all these days, I have increased the chanting number of times of chanting. See, you will become more aware of yourself by doing so. Yes, very true. Yeah, because we'll be always in that mind. Like now, it has become like whenever I'm just sitting quietly, I'll be that will be recalling. Like automatically, I'll be chanting Hare Krishna in my mind. So it is like I don't know what in the background it is doing for me, because we are all in this. Chetna, this happening because of your this age and stage of your life. Yes, you are experienced now. For a child, it is not that case. उसके लिए automatically कुछ नहीं आएगा. वो chanting करेगा तो वो अच्छे gurus उसकी life में आएंगे जो उसको मार्गदर्शन देंगे. तो chanting automatically never happens. अभी तो हम सब एक experienced person है. हम लोग married हैं, बच्चे हैं. So we are at a very high age and stage of our life. But for a new people, the chanting will only help you to bring gurus in your life. What I think so. Automatic कुछ नहीं आता है. Automatic things never happen. In fact, I have come across, many people, in my life, they do, chanting, they do a lot of, service, they do go to the temple. But again, you see, they are dogmatic, in their attitude, oh, मैं ये सब करता हूँ मैं, लेकिन कोई ये नहीं हो रहा है. But, something, gets into their mind and they become, egoistic. हाँ भाई, मैं इतना ये कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ये नहीं हो रहा है. And they go on, arguing, on such things. I think, that bhakti mode, इसमें जो गीता में जो क्लियरली मेंशन किया है, सात्विक मोड, राजसिक और तमस. भक्ति मोड, इसीलिए तो 5 चीजें बताई है. चैंटिंग अलोन नहीं है. A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है. Yes. No, chanting is, it is just, मुझे जो लगता है, I may be wrong again, but these are all, A, B, C, D, E, chanting ये करना है. बाद में देखिए, ये जो है, गैम्बलिंग करना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, नॉनवेज नहीं करना चाहिए, दूसरा स्त्री के साथ देखिए ये नहीं करना चाहिए. I think, these are all, part of the process to purify our mind, body and soul, to go to the next level of reaching out to the divinity. जैसा हरीश प्रभु जी बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखिए क्या, we have to be in a divine mood, and only when we are in the divinity mood, then only things start happening for us in a proper way. I think it is a process.
Prabhuji, what I feel is like we have to ये कलियुग धर्म है ना, इसको हमें निभाना चाहिए. कलियुग Yes. का युग धर्म है कि we have to like by chanting the things, like by remembering the God by any means, like doing in every action, bring in the God, Krishna consciousness, then only you can, and it is a easy way also. Yeah, it for is an easy achieving way. Kali Yuga, because we have lot of distractions. So the only way we can achieve it is through remembering God and stressing on remember, like you're chanting Hare Krishna. That is the Yeah. along with by also along with chanting, we have to do other things also, like association of sadhu sang and all that, reading the good books, like with talk, like Prabhuji always says about reading Bhagavatam. तो हम लोग कल ये पूछ सकते हैं ना प्रभु जी से कि अगर Yes, किसी को yes. एक पैरासिटामोल से काम चल जाता है तो भी उसको नंबर्स एसोसिएट करना जरूरी है कि नहीं, है ना? Actually, I remember a long time back, Prabhuji, when somebody had asked about this, that what is the significance of 108? So it is, see, basically it is 108 तो डेफिनेटली उसका सिग्निफिकेंस है. वो तो एक माला के अंदर ही 108 बीट्स, देयर आर 108 बीट्स आर देयर. सो 108 सिग्निफिकेंस आई अंडरस्टूड इट, बट one माला or 16 माला, that is my reason. If you have a time, if you have, if you can take out your maximum potential and do it, it is your choice. But if I say Hare Krishna in one word, that kind of vatsalya bhav or that kind of devotion is there, then why we are associating number 1 mala or 16 mala? That is the question we can, it's a very important day for us today, so that we get an opinion and perspective of everybody. 108 has importance. In one mala there are 108 beats. अपना नाम जब रह जाएगा number. Yeah. मैं नाम जब कर लेता तो रह जाएगा वो. So I think, Samta Ben has, nicely touched, on all aspects. He has covered, beautifully. I think, yes, we can, check up, if by doing, only one mala, why can't we? Yes, that question will definitely persist, but as Chetna madam said, okay, in Kali Yuga, this is the process, okay, by doing so, you can get into, bhakti mode, you can fine tune, ourselves, it depends, from person to person. You cannot, standardize and say that, okay, if I do, 1 mala or 2 mala or 4 mala or 16 malas, yes, things will start happening. No, it may or may not. Again, it depends, on the consciousness level of, the person and the awareness level, it depends, on the individual, this one. Maybe, somebody is already, in an advanced state of, of mind and body and soul. Maybe because of, his karmas, in the previous birth. We don't know. So these are all, big question marks, for us. But then what needs to be followed, there, yes, we have to be, in the right process. We should ask ourselves, are we in the right process? Yes or no? If we are in the right process, things will happen, for sure, in due course of time. If not now, if not tomorrow, if not day after tomorrow, but definitely, in future, things will start happening if we are in the right process of, doing things in the righteous way. This is what I feel. Ask on Saturday. Harish, can we do it mala by our own self? We can leave the meeting by 7, and can we do mala by ourselves, so that it was a good discussion, because if we are attending Gita session and if somebody asks what is the significance of 16 mala or what that is, so it is a good perspective that we had a discussion today. We got an opportunity for that, so that we are answerable to everybody's question, and that make us different from others, rather than rote learning or simply following what others says, because we human being in 21st century are a logical mind, and people are understand through logical mind. That is the fact of the life. So if we understand the science behind it, it is really helpful. So we will do japa after leaving the meeting, as per our sanity and as per our time and space. Thank you, everybody. Now I need to leave the meeting. Thank you everyone for wonderful perspective. Thank you everyone. Hare Krishna. God bless all. Yes, thank you. Yeah. Thank you.